सामने से आएगा पानी पीते हुए हेड ऑन हेड ऑन Where the Himalayan foothills melt into fertile mist-covered lowlands begins the Terai, meaning moist land. Shaped by Himalayan rivers, this vast belt of marshes, grasslands, and dense forests stretches along the India-Nepal border. Hidden within this wild northern frontier lies the Dudhwa National Park, far from the familiar tiger trails in India, yet one of the India's richest and least understood wilderness. Dudhwa is not just about big cats. It is one of India's last true terai ecosystems, home to swamp deers, rhinos, migratory birds, and the ancient sal tree dominance. While other parks showcase wildlife, Dudhwa tells the deeper story of habitat itself. When most people think of the rhinos, they think of Kaziranga in Assam. But few know that these giants roamed in Terai grasslands too. Hunting, habitat loss, and expanding human settlements slowly erased them from this region. In 1980, Dudhwa became part of an ambitious conservation effort. Rhinos were carefully relocated, mainly from Assam and Nepal, to rebuild the lost population here. It was one of India's lesser known but remarkable wildlife restoration experiments. माल काट लिया वो तो राइनो है रोड पे राइनो है This is Bijili, daughter of the iconic tigress Sharmili, and the rising legacy of Dudhwa's hidden wild. In the Terai, she carries more than a bloodline. She carries the quiet strength, instinct, and the survival of generations. For a few rare minutes, Bijli was quietly at the water's edge, calm, alert, and completely in her element. But as more gypsies gathered, she slowly melted back into the forest. We waited, hoping she'd return, but she didn't. Perhaps she's watching us instead. So, with patience and curiosity, we moved deeper into the wild. I had seen the crocodiles resting on the riverbanks and gliding through the water before, but this top view was something else entirely. Quite ancient and mesmerizing. As our morning safari is coming to an end, we found this mother rhino resting in the water and her calf close beside her. For rhinos, these cool waters offer comfort, protection, and safety for their young ones. And with that, this morning safari comes to an end. Stay on with me on this video to see the tigress Bijli again in the evening safari.
As our evening safari began, our first instinct was clear: find Bijili again. Seeing a tiger in the wild is unforgettable, but searching for one, listening for alarm calls, and chasing whispers through the forest, that's a thrill on an entirely different level. But before we meet Bijili again, Dudhwa has its own story to tell, and who is better to reveal it than the guide who knows this wild by heart? दुधवा टाइगर रिजर्व। सर मेरा नाम यश गुप्ता है। सर जंगल के स्टार्ट सर पेड़ों से, अगर सर पेड़ों की बात की जाए तो 70 से 80% साल के पेड़ हमारे में पाए जाते हैं। साल सर बहुत ज़्यादा मजबूत लकड़ी होती है। इसकी एक कहावत है 300 साल, 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा, 100 साल सड़ा। बाकी चलता है काफ़ी साल है। ब्रिटिश काल में पहले यहाँ पे लकड़ियाँ काट काट के ले जाते थे जब उनका शासन था यहाँ पे। तो जो रेलवे ट्रैक बनती है उनके नीचे जो स्लीपर बनते थे वो साल के ही बनते थे। सर यहाँ पे पहले सर शासन हुआ करता था ब्रिटिश काल का, तो सर लकड़ी की तस्करी भी हुआ करती थी। बाकी सर दुधवा के अगर एरिया की बात की जाए तो दुधवा सर 3 पार्टेड में डिवाइडेड है। दुधवा, किशनपुर, करतनिया घाट। दुधवा सर मेन है, बाकी ये दोनों ब्रांचेस है, किशनपुर और करतनिया घाट। अगर सर दुधवा के एरिया की बात की जाए तो 680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसमें वैसे हम लोग को 20% एरिया टूरिज्म के दिया गया है। बाकी सर कोर एरिया है। सर अगर टोटल की बात की जाए तो 1284.30 वर्ग किलोमीटर में है सर फैला हुआ दुधवा, किशनपुर, करतनिया घाट। टाइगर सर बात की जाए तो सर हमारे में दुधवा में 35 प्लस टाइगर हैं। 4 साल में एक बार काउंटिंग होती है। 2022 में काउंटिंग हुई थी तो 35 थे और अब बढ़े ही होंगे। अभी 26 में काउंटिंग हो चुकी है बट अभी रिजल्ट नहीं आया। किशनपुर में 41 है और आपका करतनिया घाट में 59। टोटल हो गए 135। ये 2022 का है डेटा। जी जी। Have you ever wondered, can a tiger bring down a massive rhino? Before the forest answered, our driver had a story that made us think twice. तो राइनो एरिया में एक टाइगर था सर, मेल टाइगर काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ पे एक फीमेल राइनोसोरस थी, तो वो प्रेग्नेंट भी थी। तो वो एक दलदल में फंस गई थी, जिसके कारण उसको टाइगर मार पाया। जी, वरना इजी नहीं है राइनो को मारना। इजी नहीं है मारना सर। फिलहाल वो टाइगर जो था वो लखनऊ से ला के यहाँ छोड़ा गया था, रहमान खेड़ा से। तो लोग उसको अल्फ़ा मेल कहते हैं। काफ़ी बड़ा टाइगर था। तो जब डेड बॉडी के लिए पहुँचे हैं उठाने के लिए, तब वो बॉडी के ऊपर राइनो को, पानी में राइनो था और राइनो के ऊपर खड़ा हुआ खा रहा था। ओह माय गॉड। तो उसका ये पोर्शन खा लिया था उसने। अच्छा, वो फंस गया था इसीलिए मार पाया जी, वो। हाँ, ऐसे नहीं, छोटे अटैक भी नहीं करता राइनो छोटे राइनोस को। राइनो काफ को तो मार सकता है टाइगर, हाँ। बट बड़े राइनो को पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई वजह रही होगी, जैसे कर रहे, जैसे राइनो कोई इंजर्ड हो काफ़ी, तब टाइगर मार सकता है उसको। या तो जैसे वो फंस गया था कोई दलदल में, तब उसको राइनो को टाइगर मार पाया। अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं। Guided by our instinct and experience, we went deeper into the forest. Our guide seems to know exactly where Bijli might be, and this time we were spot on. We spotted Bijli at around 3:30 in the evening, resting right in the heart of Dudhwa's forest path, as if she owned the time itself. And for the next 2 hours, neither we did move, nor did she. Tigers often spend long stretches resting to conserve energy, especially in cool, shaded forest corridors like these, where silence, cover, and control come naturally. But when you are this close to a tiger, the time travels. Every glance, every breath, and every flick of an ear becomes mesmerizing.
Okay. उठाओ उठाओ खुश हो गया This is the magic few talk about. Wildlife isn't always about action. Sometimes the greatest thrill is in simply sharing the space with the wild and realizing that for a brief moment you are part of its silence. And there, beneath the Dudhwa's towering sal giants and within its dense, secretive wilderness, Bijili reminded us that this forest is not just seen, it is felt. In the Terai, where grasslands whisper and shadows move softly, every moment becomes a story, and every story leaves you wanting more. Alright, question for you. Do you think you know this bird? Drop me its name in the comments and tell me what it is feeding on. Until we meet in the next video, thanks for watching. Stay tuned for more interesting stories from Wildlife by Vikotla.